Hey foodies, welcome to Amar's Kitchen और आज we are gonna make corn fritters और we can say कॉर्न के पकौड़े। So चलिए let's get started। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं then please subscribe my channel। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑफ कॉर्न लिए हैं जो बॉइल्ड हैं। आप फ्रोज़न कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ इन्हें रफली चॉप कर लें। मेक श्योर आप इनकी पेस्ट मत बनाएं, जस्ट रफली चॉप देम। एंड नाउ टेक 1 कप मैदा। अगर आप मैदा नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करें थोड़ा सा। गिव इट अ गुड मिक्स टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड देन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट लेके आने के लिए चॉप्ड पार्सले ऐड किया है 1/2 कप। अगर आपके पास पार्सले लीव्स नहीं हैं देन यू कैन ऐड कोरिएंडर लीव्स ऑल्सो। Many people add egg also at this stage, 1 egg for a 1 cup of fritters। अगर आप egg नहीं खाते तो आप egg skip भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एग नहीं ऐड किया, ये 100% वेजिटेरियन फ्रिटर्स हैं। और उसके बाद ऐड लिटिल वाटर एंड ऐड योर रफली चॉप्ड कॉर्न्स। Give it a good mix and try to make a nice batter. And now I have added 1/2 teaspoon red chilies with some water। और ये आपका जो बैटर है वो काफ़ी स्टिकी बनेगा बिकॉज़ हम लोगों के कॉर्न्स में भी थोड़ा सा स्टिकनेस होती है। एंड सो एज आई एम यूजिंग हियर मैदा विच इज़ अनब्लीच्ड फ्लावर, दैट्स वाई। और उसके बाद नाउ ऐड 3 to 4 tablespoon oil in your pan। I'm gonna shallow fry them. If you want, you can fry them also, deep fry। और जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए देन आप इनकी टिक्की बनाएं। अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के गिव इट अ शेप ऑफ टिक्की एंड स्टार्ट shallow frying them। तो अगर आपको हाथों पे लगाकर इसे नहीं शेप देनी है देन यू कैन डायरेक्ट पुट विद अ स्पून ऑल्सो बिकॉज दिस बैटर इज़ रियली वेरी स्टिकी। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के फ्रिटर्स हैं और बहुत ही यमी टी टाइम स्नैक है। So after 1 to 2 minutes, I'm gonna flip them। Once both the sides are crispy and golden brown, your corn fritters are ready।
Take them out on your plate. वन कप मैदे की क्वांटिटी और 1.5 कप ऑफ कॉर्न की क्वांटिटी के साथ मैंने टोटल ऑलमोस्ट 15 फ्रिटर्स बनाए हैं. सो दिस इज़ माई सेकेंड बैच. आई एम डूइंग दिस डायरेक्ट विद माई स्पून rather than making and giving a shape of patties. Again, after 1 to 2 minutes, we'll turn them around. And once both sides are cooked, take them out again and serve them with mayonnaise or tomato ketchup. It is really good, best tea time healthy snacks for kids, toddlers, for entire family, whenever you feel like eating something warm on the cold weather. So if you like my video, then don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you for watching. Stay safe and stay happy. Bye bye.